Good afternoon, everyone. I extend warm welcome to each one of you joining us for the conference call of Praveg Limited, where we aim to delve into our exceptional performance during Q3 financial year 2024. Praveg Limited, a trailblazer in the industry, has firmly established its footprint across diverse business segments such as tourism and hospitality, as well as exhibition and event management. Our strength lies in our independent and sophisticated infrastructure, seasoned manpower, and an in-house creative studio, which collectively give us a competitive edge to cater to diverse needs across business verticals. As of the current moment, the operational success of our diverse portfolio is evident in our current 4.26 lakh square meters of active projects, providing accommodation in 9 resorts with a total of 545 rooms, successfully securing bookings for over 1,20,000 rooms in financial year Q3 24, underscores our commitment to delivering varied and quality accommodation, ensuring utmost satisfaction for our valued guests. Allow me to shed light on some key developments and financial highlights from Q3 financial year 24. Company's recent achievements and developments showcase the company's strategic power in the hospitality sector. The reception of 3 work orders for prominent locations and the work order for developing tech at Agatti Island, Lakshadweep, highlight Praveg's expanding footprint and versatility in project execution. Company's recent series of developments underscores its commitment to strategic expansion and excellence in the hospitality and tourism sectors. The acquisition of multiple work orders for diverse projects ranging from the development of Damanganga Garden in Daman to the establishment of a tent city in Kihim, Maharashtra, demonstrates the company's versatility and geographic reach. The amalgamation of Elogia further reflects Praveg's proactive approach to enhancing its corporate structure and optimizing synergies. The inauguration of Praveg's Grand Elogia in Ahmedabad, along with the operational commencement of the White Run Resort and Praveg's Dholavira Resort in Gujarat, signifies the company's commitment to providing diverse and high-quality experience for its clientele. The simultaneous opening of Praveg's Tent City at Ayodhya and a beach resort at Gogla Beach, Diu, aligning with the auspicious day of Deepavali, added a cultural and celebratory dimension to the company's offerings. The work order from Agatti Lakshadweep and the continued success in securing various other properties highlight Praveg's trusted partnership with the government entities. Moreover, the preferential allotment of 2 lakh equity shares converted from warrants at Rs 487 in November 2023 showcases investor confidence in Praveg's growth prospects. This infusion of capital further solidifies the company's financial position, providing a strong foundation for future endeavors. In summary, company's multifaceted efforts position the company as a dynamic and strategic player in the hospitality industry. These initiatives not only enrich the company's portfolio but also contribute to the growth of the regions in which it operates. Investors can find confidence in Praveg's proactive approach, evident in its diverse ventures and commitment to delivering exceptional hospitality experiences. Overall, Praveg's recent development positions it as a dynamic player in the hospitality industry, poised for sustained growth and success. The company's strategic initiatives and commitment to delivering exceptional experiences make it an attractive prospect for investors looking for long-term value in the evolving market. Now, let's take a closer look at company's financial performance in Q3 financial year 24. The third quarter results for financial year 24 showcase a notable 19.33 YOY growth in total revenue, reaching to rupees 33.97 crore. However, EBITDA witnessed a dip of minus 22.81% at rupees 13.26 crore, reflecting a change in the profit margin dynamics. The net profit recorded at rupees 8.09 crore with the net profit margin of 23.94%.
Additionally, the hospitality segment contributing to rupees 25.62 crore and events and exhibition segments adding to rupees 7.46 crore to the revenue. There's a balanced revenue stream. Our optimism remains unwavering for Q3 financial year 24. This optimism is fueled by the strategic scaling up of our events and exhibition business and the timely initiation of upcoming hospitality projects. As a company, Praveg showcases resilience through strategic initiatives that pave the way for a promising future. Our steadfast commitment to excellence, paired with the untapped potential in our key business sectors, positions us for sustained growth and prosperity. In line with our growth strategy, we have initiated recruitment efforts to establish a strong professional team. This team is anticipated to play a pivotal role in supporting our expansion and is expected to have a positive impact on our overall performance for the current and coming years. As we move forward, our main goal is to boost our hospitality business. We are also excited about the expected growth in our events and exhibition sectors as well, which we believe will make our overall operations even better. Before we jump into the question and answer session, I want to say a thank you to everyone who has been a part of our growth journey. Your support and involvement have played a big role in our success, and we really appreciate what you bring to the table. With this, I would like to open the floor for questions and answers. Thank you once again for your presence and continued support. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touch-tone phone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we'll wait for a moment while the question queue assembles. The first question is from the line of Ranudeep from MAS Capital. Please go ahead. Thank you for the opportunity. My question is to Vishnu sir. We've seen an amazing ramp up in the last few quarters, be it the opening of resorts in new locations or acquisition of hotels in Ahmedabad. How confident are you with respect to your vision for 2027? And the second part of this question, are we expected to see any more acquisitions in near future? Hello? Yes, sir. Can you repeat again? Sure. So we have seen an amazing ramp up in the last few quarters, be it the opening of resorts in new locations or acquisition of hotels in Ahmedabad. How confident are you with respect to the Vision 2027 that you set? And the second part of the question was, are we expected to see any more new acquisitions? Thank you. Yeah. First of all, thanks to all my fellow investors, and thank you for your interest. Good afternoon to everybody. Very nice question you have raised. I would like to tell about my present path vis-a-vis of my Vision 28. मैं आपको थोड़ा फिर से एक बार रिट्रेट करना चाहूँगा. हमने जो विजन बनाया था 23 दिसंबर 22 के बाद हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई, इसमें जो भी एक्विजिशन हो रहे हैं उसकी डिटेलिंग अभी थोड़ी देर में आपको विजुअल में रिपीट करेगी. बट I would like to tell that we have acquired around 22 or 23 resorts. Out of that, 9 or 10 is under operation. Recently, in Q1, Q2, Q3, again, that in this quarter, means running quarter, you will find further operational resort. That उसके साथ उसके बाद भी एक Q4, Q24-5 का नया Q1 में भी most of मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ. नहीं हो सकता है 1-2 रिसोर्ट्स ऑपरेशनल न हो, 2-3. उसके अलावा मेजर इट विल बी ऑपरेशनल. नंबर 1. Number 2, my company journey for acquisition will continue
like you right now seeing, looking up, आप देख रहे हैं, वही कंटिन्यू रहने वाली है। तीसरी बात करना चाहूंगा, जो आपको कॉन्फिडेंस के बारे में बताऊंगा मैं आपको। आप समझ रहे हैं कि क्वार्टर 3 के अंदर, क्वार्टर 2 के अंदर मेजरली हमारे 2 + 7 और 8 ऑपरेशनल हुए। आप रिजल्ट में भी देख सकते हैं। ईबीडा मार्जिन मैंने बोला था प्रीवियसली अर्लियर, आपने अगर कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, मेरा ये जो चलता है किरिन से, तो इसमें मैंने 40% ईबीडा बोला था, अगर आपको याद है तो सब लोगों को। तो वो 39% के आए हैं। मैं आपको एक अच्छा इसमें आपको एक विजन डिटेलिंग देना चाहता हूँ। कोई भी रिसोर्ट जब नया स्टार्ट होता है तो इसमें टाइम लगता है ऑक्यूपेंसी पर आने में, पब्लिक अवेयरनेस आने में, माउथ पब्लिसिटी इज मेजर थिंग। तो वो सारी जो पब्लिसिटी में वी नीडेड 6 to 12 मंथ टाइम। बट आप Q3 में देख सकते हैं कि आप Q2 और Q3 में ईबीडा मार्जिन हमारा वही रहा है, यानी कि शुरुआत से भी अच्छा रिस्पांस हमें को मिला है गेस्ट का, और उसका रिजल्ट आप Q3 में देख सकते हैं। आपको अगेन मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा कि ड्यू टू अवर एक्सपांशन एंड इनडायरेक्ट ओवरहेड इज इंक्रीजिंग ड्यू टू अवर 23 रिजॉर्ट्स ऑपरेशनल करने हैं, तो उसके लिए टीम बिल्टअप चल रहा है। तो उसकी वजह से हमारा आप बैलेंस शीट भी स्टडी, रिजल्ट भी स्टडी कर सकते हैं। अवर इनडायरेक्ट कॉस्ट इज मैसिवली हाई एंड दैट विल डिक्रीज अवर प्रॉफिट, नॉट ईबीडा मार्जिन। ईबीडा मार्जिन तो जैसे हमारे रिसोर्ट पुराने हो गए, वो ईबीडा मार्जिन 40 का 45% मिलेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन अभी हमारा जो, जब तक हमारे रिसोर्ट एक माइलस्टोन पे अचीव नहीं पहुंचते हैं, यानी कि 23-25 पे नहीं पहुंचते हैं, तब तक जो भी ओवरहेड है वो हमारे एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल रिसोर्ट पे लोड हो रहे हैं। बैलेंस शीट में एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग आप बोलते हैं, एब्सॉर्प्शन जो कॉस्टिंग है वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमारे 23 का ओवरहेड 9 रिसोर्ट पे क्वार्टर 3 के लोडेड था, इवन दो वी परफॉर्म दिस रिजल्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था सर, टेक्नोलॉजी इन ट्रैवल इज गोइंग वेरी बिग. Do we have any plans of collaborating with any SaaS company to increase our occupancy, especially when we see the occupancy for this quarter was at 47%. I think many SaaS companies are helping many of these the top travel companies like hospitality companies. One of the SaaS companies, listed companies, RateGain, they have been doing a great job. So any plans of collaborating with any SaaS company? We are discussing every corner of opportunity and we are open for that. And if the sometime what happen कि अगर मैं किसी को बल्क सेल करता हूँ और वही सेल हमें को रिटेल सेल में रिवर्स होके आता है, तो वो कंपनी का ARR पे इफेक्ट डालता है, वो सब देखना होता है। लेकिन माय टीम इज वेरी एफिशिएंटली मैनेजिंग दिस थिंग। जहां भी अपॉर्चुनिटी ऐसी लगेगी कि जिसमें हम उसका वैल्यू एडिशन ऑक्यूपेंसी में कर सकते हैं, तो वो हम करेंगे। मैं आपको और एक बताना चाहूंगा कि क्वार्टर 3 का जो 47% ऑक्यूपेंसी जो बोल रहे हैं, वो आई थिंक डीजल बेन ज्यादा ब्रीफ करेगी अभी थोड़ी देर में। आई एम नॉट डिटेल एनालिस्ट दिस थिंग। डीजल बेन इज बीइंग अ फाइनेंस डायरेक्टर, ही एनालिस्ट दिस थिंग। बट जो नए रिसोर्ट हमारे स्टार्ट हुए हैं उसकी ऑक्यूपेंसी का रेशियो अलग है, और जो हमारी एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी पुरानी 2-3-4 प्रॉपर्टी है उसका रेशियो अलग है। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि नई प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेंसी रेशियो धीरे धीरे बिल्टअप होता है। जैसे गेस्ट आएंगे, एंजॉय करेंगे, उसको बाहर माउथ पब्लिसिटी में जाएगा, तो अगेन उसका इफेक्ट आता है। तो वो नेक्स्ट दिसंबर के क्वार्टर आएगा, 1 साल होगा, तो आपको इसमें इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा। तो ओवरऑल डायनेमिक्स ऐसी तरह काम करते हैं प्रवेग में। श्योर, थैंक यू सर। वन लास्ट क्वेश्चन सर, हमारा जो इनॉग्रल इन्वेस्टर कॉल हुआ था 1 साल पहले, वी हैड डिस्कस्ड, समवन हैड सजेस्टेड अबाउट डिस्काउंट कूपन्स और ऑफर्स फॉर अ शेयर होल्डर। wanted to check sir, उसके बारे में कुछ हमारा थॉट है, स्पेशली when the poster boy of Indian hospitality IHCL, the Taj Group offers 25% discount coupons to its shareholders.
Bijalben, I am eager to offer all these thing if possible. लेकिन मेरे को जो एडवाइस किया गया है उसके हिसाब से कुछ शेयर होल्डर को हम नहीं दे सकते हैं, ऐसा एक रिमार्क्स है. बिजलमैन, कैन यू चेक इनटू डिटेल? अगर ताज होटल ऐसी तरह शेयर होल्डर को ऑफर करता है और वो लीगल परमिसिबल है, then only we are also happy, more than happy to welcome our shareholder first. They are the pillar of my company built up. So मैं पहला ऐसे ही मेरा विश रहेगा दिल का कि उनको पहला प्रिविलेज मिले. Gentlemen, kindly go into detail. Sure. Thank you so much, sir, and appreciate all the encouragement and confidence. Wishing you all the best. Thank you so much. Thank you very much. Ladies and gentlemen, please press star and 1 to ask question. The next question is from the line of Pritesh Chheda from Lucky Investments. Please go ahead. Yeah, sir. If you could tell what is the occupancy that you would have recorded in the quarter 3 and these room additions that we see between quarter 2 and quarter 3, about 400 rooms added. If you could break what was the occupancy in the newer rooms and what was the occupancy in the 300 rooms. One, if you could give the blended, and two separately also. Bijalben? Yes. See, basically the occupancy varies based on location to location and as per the how old the resort is. But if we talk about the Whiterun resorts, we have an average occupancy of 65%. Then if we talk about the one resorts, then again we have an occupancy of around 75%. Ayodhya being new one and the Praveg Grand Elogia being newly, as well as the Dholavira being newly inaugurated in the month of mid of the November, we witnessed the occupancy somewhere around 25 to 30% in that. But rest of the locations we have the around 60 to 80% occupancy in our other resorts. Which means the DU, which was October is Daman and 10 city was. Okay. So if I look at your presentation, Bugla DU is November, but before that, whatever resorts that I see, 75% occupancy, right? Yes, right. Okay. Which means that the Grand Eulogia business has flowed in for 3 months in these numbers, right? Yeah. 1 month. It's not so sad, but 1.5 months. 1.5 months. Yeah, and secondly, Eulogia is mainly on wedding events. So this occupancy is only for room. We have 4 diverse revenue generating from Grand Eulogia. One is from wedding banqueting, second is a business conference, third is a room. So we have to understand that dynamic. Their occupancy ratio is not much important because of we have another 3 source of income equivalent to room revenue. So you find this running quarter, all these things वो आपको सेट राइट देखने मिलेगी. और दूसरा ये है कि नवंबर मंथ के अंदर हमने इनॉग्रेशन किया, उसका जो वेडिंग प्लानर कोई भी वेडिंग होते हैं वो लोग 6 महीने 12 महीने पहले बुक करना चाहते हैं. तो हमारा जो बुकिंग था वो हम नहीं ले सकते जब तक हम वो प्रॉपर्टी को कब चालू करने का श्योर नहीं है. तो उसकी वजह से नवंबर दिसंबर के अंदर हमने एडवांस ऑफ बुकिंग जो प्रोबेबल डेट थी उसके आधार पे हम नहीं ले सकते वेडिंग के केस में. तो उसकी इफेक्ट भी आपको देखने मिलेगी. Okay. And my last question is, sir, this on the slide. Hello, Pritesh sir, can you take the device closer to you? There are these upcoming resorts where you've mentioned. How many of these upcoming or the number will flow in over the next 6 to 9 months, whatever you have mentioned here? Yeah, basically we have the upcoming resorts, 13 resorts are upcoming,
and it will add another 425 rooms inventory into our portfolio. But in how much time? Within it will all these under construction properties we are expecting to complete in next 7 to 8 months. Okay. So next 3 quarters, basically. Yeah. Okay. Thank you. I'll come back if I have more questions. But some will continue in fourth quarter also, some in first quarter of new year also, majorly. Okay. Thank you. And the next question is from the line of Yashwanti from Cogent Finvest. Please go ahead. Yeah, thank you, sir. And very congratulations the way you are expanding and improving your presence in the hospitality with your unique hospitality offering. So my question is, we have seen this 9 months numbers. So you were explaining about the pressure on the EBITDA margin, but as we have another 12 to 13 projects under the construction, and that will again take another 6 to 9. The line for the current participant has been disconnected. We will take the next question. The next question is from the line of Mangesh Kulkarni from Almond Financial Services Limited. Please go ahead. Hello. Am I audible, sir? Yes, sir. Yes, sir. I just wanted to have clarification on our events and exhibition business. This Vibrant Gujarat Summit, which was held in the month of January, so will it have any impact on our Q4 numbers? Means whether we were part of that Vibrant Gujarat exhibition? Yes, we have participated in exhibition part of business, and some little business we have captured from Vibrant Gujarat also. But as you know, that our focus is right now on development of these 23 property. Out of these 9 we have operationalized. तो then so पूरा टीम हमारा उसके पीछे लगा हुआ है. तो क्वार्टर 4 में थोड़ा बहुत वाइब्रेंट गुजरात का भी बिजनेस हमारे को मिला है, वो आएगा. Okay, because earlier अपना major business Vibrant Gujarat जब भी समिट होता था उसमें से आता था. Sure. Yes, Sure. We have eyes on event exhibition business. Yeah. And my team is हमारी टीम उसके लिए प्रिपेयर हो रही है कि soon we will capture some business again. But as you know कि हमारे को ये जो ऑपरेशनल जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए हमारा फोकस ज्यादा था, तो उसकी वजह से हमने उसको कॉम्प्रोमाइज किया है. जब ये कॉम्प्रोमाइजेशन हटेगा और पूरा फोकस इसमें भी दोनों सेगमेंट में इक्वलेंट फोकस आएगा, तब आपको मेजर बिजनेस देखने मिलेगा. ओके सर. एंड माय नेक्स्ट और इसका इफेक्ट भी बैलेंस शीट में आएगा. थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको. Okay. And my next question is about this Ayodhya, which is existing operational capacity of 30 room tents. 39. So yeah, no, existing is 30, right? 30 plus naya. Yeah, you are right. So how is the business there post this opening of the Ayodhya temple? Diesel bin. Hello. Just me. Diesel bin. Yeah. Hello. Present. Yeah. In the month of January, while at the opening of the Ayodhya temple, there were some government restrictions. Basically, they were due to high VVIPs movements. They were not allowing normal visitors to visit the Ayodhya. But yes, from that we are getting the good responses, and in almost we are getting 75 to 80% occupancy in Ayodhya. Okay, so existing facilities we are around 80% booking are there, and yes. One more facility opened yesterday, right? Right. Okay. Thank you, madam. Thank you. And the next question is from the line of Aditya Mehta from GK Capital. Please go ahead. Yeah, hi sir. Congratulations on a good set of numbers. So my question is with regards to the guidance that we have given for FY25 in a TV interview 2 months back. So according to that, we were targeting 300 crores of revenue in FY25.
But given that we'll be operating only about 1,000 rooms with 50% occupancy and 10,000 ARR, that would translate to about 180 crores of revenue. So not 30%. Not where you bring this 30% occupancy? No, 50% occupancy. Okay. 50% occupancy with 10,000 as ARR. Over the year, we will generate 180 crores of revenue from hospitality business. So rest 120 crores, so how we are targeting to fulfill? I think आपने एक जो इंटरव्यूअर्स ने क्वेश्चन किया था उसने 300 वाला, मैं ऐसा बोलूंगा कि there is a not only ARR which going to contribute our revenue. Next, our weddings revenue is very 3 property we are developing on wedding events. Adalaj, Grandilogia, Kachigam, and one more property is going to inaugurate for the social and wedding events. Another 23 resorts. Bijalben, 23 resort का कितना रूम है टोटल? 23 resorts total room is 1109. 1109, या तो 1109 वो रूम है, प्लस हमारा रेवेन्यू आने वाला है. आप जो एवरेज जो निकाल रहे हैं 10,000, बट हमारी 4-5 प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा रेवेन्यू वाली है, जहां हम 25,000, 15,000, 30,000 का हमारा ARR रहने वाला है. वो सारा मिला के हमारा प्रोडक्ट मिक्स बनेगा. वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वी विल अचीव दैट टारगेट. Okay, so FY25 के लिए near about 300 crores का target. इवेंट एग्जीबिशन तो हमने गिना भी नहीं, तो अभी वो भी हम फोकस कर रहे हैं 24/5 में. Okay, so 300 crores का around 300 crores का टारगेट जो है इंटैक्ट है FY25 के लिए, with about 50% EBITDA margins. 40% से 50% के बीच में. Okay, 40 to 50. न्यू रिसोर्ट में 40% होता है, ओल्ड में 50-55 तक जा सकता है, बट एवरेज प्रोडक्ट मिक्स नए रिसोर्ट्स में आप 40% EBITDA मार्जिन गिनो तो अच्छा है. 35 to 40%. Got it. Thank you, sir. All the best to you. Thank you. And the next question is from the line of Yashwanti from Cogent Invest. Please go ahead. Yeah, thank you, sir. My line got disconnected. So I just wanted to understand our EBITDA margin profile. You were explaining that we were in the middle of, constructing a few more resorts, and that is why we have some overhead expenses which has taken a toll on our profitability. So currently we have around 12 to 13 resorts under operation, which will take another 6 to 9 months to get it operation. So just wanted to understand going forward when we can see this EBITDA margin stabilizing. Because again, after completion of this resort, the company will have few more expansion on the card, as the company is offering a unique resort facilities and expanding at a very good speed. So just wanted to understand when we can see this EBITDA margin settling down and where it will be settling down. Hello? Hello, can you hear me? Yes, we can hear you. Hello. Yes, I sir. can hear you. Our EBITDA margin will improve day by day. There is 2-3 reasons. One, it depend upon weighted average statistic. मैं आपको बताना चाहूँगा. हमारे 2-3 रिसोर्ट्स पहले थे, वो 70%, 50%, 55% पे काम कर रहे हैं ऑक्यूपेंसी में. Okay. नए जो रिसोर्ट है, सर्टेन रिसोर्ट 70% पे, सर्टेन रिसोर्ट 40% पे, सर्टेन रिसोर्ट 25% पे, 1-2 रिसोर्ट्स को छोड़ के मेजरली 50% आसपास ऑक्यूपेंसी के काम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, इवन फर्स्ट क्वार्टर में इन ऑपरेशन में. तो जैसे जैसे वो पुराने बनते जाएंगे, एक उसका इफेक्ट आएगा ऑक्यूपेंसी रेशियो में. नया ऐड होता जाएगा. फॉर एग्जांपल, जब 23 हो जाते हैं, उसके बाद अगर नए 10 ऐड होते हैं, तो नए ऐड है उसका 40 से 50% ऑक्यूपेंसी आएगा. लेकिन जो पुराना हो गया है वो 50 का 70% ऑक्यूपेंसी है, 60% या 55% ऑक्यूपेंसी पे आएगा. पुराना है वो फर्दर इंप्रूव होगा. तो ये वेटेड एवरेज बनने वाला है टोटल प्रोडक्ट मिक्स हमारा.
और जैसे नया ऐड होगा वो नीचे की तरफ ले जाएगा ऑक्यूपेंसी को, जो पुराना है वो उसको ऊपर की तरह ले जाएगा। तो प्रोडक्ट मिक्स कैसा बनता है, जितना नया ऐड होगा, अगर नया ज्यादा ऐड हुआ है, पुराना कम है तो नीचे आएगा। अगर पुराने 23 है, नए रिसोर्ट 10 फॉर एग्जांपल 10 ऐड हो रहे हैं तो हमारा ऑक्यूपेंसी रेशियो ऊपर जाएगा। तो ये प्रोडक्ट मिक्स पे पूरा काम होने वाला है। अल्टीमेट जो बैलेंस शीट है वो ओवरऑल ये जो प्रोडक्ट मिक्स बनता है और ऑक्यूपेंसी रेशियो के डिपेंड्स पे उसके ऊपर इफेक्ट करके EBITDA मार्जिन को तय करेगा। ओके, तो साइमल्टेनियसली आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे ना सर? मैं वही आपको समझा रहा हूँ कि अभी 23 रिसोर्ट्स पर काम चल रहे हैं, इसमें से 9 ऑपरेशनल थे, 8 या 9 Q3 में। तो पूरा 12 रिसोर्ट का जो डेवलपमेंट टीम है, कॉल सेंटर से लेके सारी टीम जो है, वो सारा कॉस्ट लोड हो रहा है 9 रिसोर्ट्स पे। जब 23 रिसोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद हमारी भी कैपेसिटी है कि हर साल 10-12 से ज्यादा रिसोर्ट नहीं ऐड कर सकते हैं। तो सिर्फ 12 के रिसोर्ट का ओवरहेड लाइन डाउन ऑन 23 रिसोर्ट। जब 23 के बाद नए बार ऑपरेशनल हो गए तब 35 हो गए, उसके बाद नए रिसोर्ट फॉर एग्जांपल 10 बन रहे हैं तो 10 के ही ओवरहेड 35 पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। आप समझिए स्टैटिस्टिक को। Yes. So you are saying that at the time you will go for a 10 resorts, new resorts. देखो ये बिजनेस है, बिजनेस इज ऑलवेज ऑन अपॉर्चुनिटी। हो सकता है 15 भी हो सकता है 5 भी हो। इट्स डिपेंड अपॉन अपॉर्चुनिटी, हाउ वी गेट द अपॉर्चुनिटी टू फॉर एक्विजिशन। टीम हमारी काफी डायनेमिक्स है, उसके लिए काफी एफर्ट्स डालते हैं, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि 10 रिसोर्ट एवरी ईयर हम ऐड कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल आपको मैं कुछ प्रोजेक्शन तो बताना पड़ेगा, तो वो प्रोजेक्शन है 10 का। हो सकता है 15 अचीव करे, हो सकता है 7 अचीव करे, लेकिन हमारे विजन 28 में हर साल 10 रिसोर्ट ऐड करने का हमारा सपना 23 से स्टार्ट है। पहले 2 रिसोर्ट थे, 23 के एंड में 11 रिसोर्ट है। 24 दिसंबर के में आपको 23 मिलेंगे, दिसंबर 25 में हो सकता है 35 के बीच में मिलेंगे, 41, 51, ऐसी तरह हमारा विजन आगे चल रहा है। जैसे ही ऑपरेशनल होंगे तो हमारा ओवरहेड कम होने वाला है, बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल रिसोर्ट बढ़ेंगे, नए रिसोर्ट का रेशियो डाउन होगा। पहले क्वार्टर में सिर्फ 2 रिसोर्ट थे, उसके ऊपर पूरा रिसोर्ट पूरा ओवरहेड चल रहा था, सारे 15 रिसोर्ट जो डेवलपमेंट चल रहे थे। अब 11 हो गया, अभी 12 के ओवरहेड चल रहे हैं, फिर 23 ऑपरेशनल हो गए, उसके बाद के नए को जो भी एक्विजिशन हो गए उसके ओवरहेड ऐड हो गए। तो ये धीरे धीरे ओवरहेड रिडक्शन तरफ जा रहा है, एब्सॉर्प्शन हो रहा है सारे रिसोर्ट के ओवरहेड पर। Okay, sir. So got it, sir. So we can safely assume that margin will range between around 40 to 43-44% going forward with the more operational resource coming into the place. You may expect. Okay. Sir, and also wanted to understand like how our strategies on the exhibition and the event business. In the start of the year, we couldn't focus more on the exhibition and the event side because we are focusing more on expanding our resources. This quarter, we are seeing some good revenue coming up from the exhibition and event side. So what is your outlook or what are your strategies under this segment of the business? मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि हमारा 23-24 इज डेडिकेटेड फॉर हॉस्पिटैलिटी अपॉर्चुनिटी। ओके। तो इसमें इवेंट एग्जीबिशन में आप Q4 में थोड़ा बहुत काम किया है, वो बात अलग है, बट मेजर हम फिर से रीस्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं इवेंट एग्जीबिशन को। ये साल को 23-4 को छोड़ के 24-5, 25-6 आपको वंडरफुल न्यूज मिलेंगे। काइंडली वेट फॉर दैट ग्रैबिंग ऑफ दैट बिजनेस। ओके। This is opportunity. My eyes is on every opportunity available in corner of India. That is really great, sir, and that's a great vision. Sir, if I may take one more. If we add that exhibition event revenue, like earlier we do,
then it will be amazing output. Ultimately, we can add on growth of company. Okay. Sir, and are we looking at expanding our hospitality business in the international market too? Good news will come. Wait. Okay. Okay, sir. Thank you so much. I can read something between the lines. Many congratulations and all the best for the future. Thank you. And the next question is from the line of Ranodeep from MAS Capital. Please go ahead. Thank you for the opportunity again. Sir, we did see the ESOP plan launch recently that you hosted. It's really inspirational for a 2,000 crore company to do an ESOP plan for all their employees. Wanted to understand what has been the initial reaction and acceptance of the same. मैं समझा नहीं आपकी बात को, फिर से जरा क्लैरिफाई करिए, क्या क्या समझना चाहते हैं ESOP में? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान लॉन्च किया, वो वीडियो देखा था सर, जिसमें आपने अपने एम्प्लॉयज के साथ बात किया लॉन्च के बारे में. So it is rare, sir, for a 2,000 crore company to do this, and it is quite inspirational. So जानना चाहता था सर, initial reaction क्या है within the employees and what has been acceptance ratio in this? My team is very happy with this ESOP scheme. It's not ये बात ऐसी नहीं है कि 2,000 करोड़ की कंपनी है, 5,000 करोड़ की कंपनी है. ये बात एक सेंटिमेंटल होती है. मैं सबको फैमिली मानता हूँ. मेरा एटीट्यूड अलग है काम करने का. My employee who is committed for my vision, आप नहीं मानेंगे, ये जो अयोध्या 2 है, we did it in 60 days. 60 days के अंदर वो 10 सिटी खड़ी की है ग्राउंड से, स्क्रैच से. ये कई एम्प्लॉई ऐसे हैं जिसने 60 डेज के अंदर हो सकता है 30 डेज की नींद ली है. तो it's my heart and emotion. My management and my team is committed for my employee first, then after shareholder. That's my they are my integral part of my development vision. So उनके लिए जो भी करना चाहिए वो मैं करता हूँ. ESOP को आप हो सकता है कई शेयरहोल्डर उसको पॉजिटिव ले, कई शेयरहोल्डर नेगेटिव ले, बट जो लोगों ने 15 साल 10 साल से हमारे कंपनी के लिए काम किया है और वो काम करने वाले हैं, तो उसके लिए मेरा भी डेडिकेशन होना चाहिए. वो सेंटिमेंटली मैंने एक्सप्रेस किया है ESOP के थ्रू. Definitely, sir. Congratulations on that, sir, and hence that question. So my next question was connected to Ayodhya only, sir. There are multiple reports जहाँ बोला जा रहा है कि Ayodhya will see around 50 million visitors per year. So, sir, wanted to understand at this juncture हमारे पास 30 rooms और 39 rooms होके total around 70 rooms है. Are we looking at Ayodhya further expansion mode के लिए और opportunities हम explore कर रहे हैं क्या सर वहाँ पे? We are in experiential hospitality. हमारा जो लोकेशन है वो काफी की लोकेशन है. मैं ऐसा पहले विश्वास करता हूं कि पहले हमारा ऑक्यूपेंसी जितना मैक्सिमम हो वो करना चाहिए रादर देन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. अभी 70 रूम है हमारे पास, उसका ऑक्यूपेंसी कितना हो रहा है. अगर 90% रीच होता है 2-3 महीने के अंदर, then after we look forward for acquiring another opportunity in Ayodhya. We have eyes on Ayodhya development. तो हम देख रहे हैं कि कितना इसमें हम कन्वर्ट कर पाएंगे. अगर हम 90% पे पहुंचते हैं और ये थोड़ा कंसिस्टेंट फिगर हमारे पास आता है, then after we build another resorts or tent city there, or we will complete it within some months, 90 days or 100 days or maximum 120 days. अगर परमानेंट स्ट्रक्चर है, सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर को यूज किया है, तो जैसे ही ऐसी अपॉर्चुनिटी देखने मिलती है कि हम 90% पे पहुंच गए, तो वी विल नेक्स्ट विद इन 120 डेज टेक दैट अपॉर्चुनिटी. Sure.
श्योर सर। सर मैं लास्ट क्वेश्चन सर, हम देख रहे हैं सर ये सीजनैलिटी वाला जो पॉइंट था पहले प्रवेग के लिए वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जैसे रण उत्सव खाली 4 महीने के लिए चलता है, वाराणसी का सेटअप हमारे लिए 8 मंथ्स के लिए चलता है, बट अभी जैसे अयोध्या और दमन एंड दीव जो आ रहे हैं मे बी फॉर 12 मंथ्स चलेंगे। सो डू यू सी इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वी विल हैव H1 as strong as H2? H1, Q1? Sir, H1, which is Q1 and Q2 मिला के, we will be as strong as H2, which is Q3 and Q4. Usually हमारा Q3 और Q4 अच्छा रहता है। हाँ, you are right there. मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये जो साल था वो सैक्रिफाइसिंग ईयर था हमारे लिए। एक अपॉर्चुनिटी लेने के लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी को छोड़ा है, उसकी इफेक्ट आपको देखने मिली है। एंड ऑल इन्वेस्टर्स सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग, राइट। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा Q1, Q2 जो 23 में था उससे अच्छा आपको 24 में मिलने वाला है, बिकॉज ऑफ हमारे 4 रिसोर्ट्स हो रहे हैं दमन में, दीव में, और 3 रिसोर्ट हो रहे हैं दमन में। तो दैट इज डिफरेंट। वहां Q1 सबसे अच्छा होता है, Q2 लोएस्ट होता है, Q3 फिर से अगेन Q1 जैसा होता है, Q4 एवरेज होता है। आप समझिए डायनेमिक्स को। अयोध्या हमारा Q1, Q2 दोनों को सपोर्ट करेगा। टेंट सिटी जो केवड़िया में है वो Q1 और Q2 में थोड़ी एवरेज से बिलो होती है। इसी तरह ये जो धौलावीरा है वो Q1, Q2 में अगेन एवरेज से नीचे जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट मिक्स बन रहा है तो उसमें हम Q1 और Q2 को अच्छी तरह इंप्रूव करेंगे, यानी कि H1 और H2 में डिफरेंस मिलेगा, बट इट विल बी कंसोलिडेटेड नियर बाय। लेकिन 25 के अंदर ये निकल जाने वाला है। श्योर, धन्यवाद। 25 Q1, Q2 विल बी marginally lower than Q3 and Q4. And we are capturing our new opportunity, new resorts, considering all these things. Q1, Q2 के कौन से बिजनेस ले रहे हैं उसको हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं टू कंसोलिडेट दिस डिफरेंसेस। आपको उसका भी एक्विजिशन आपको देखने मिलेगा नजदीक में। Okay sir. Thank you so much, sir, for the elaborate answer and wishing you all the best, sir. Thank you. Thank you. Thank you. And the next question is from the line of Mangesh Kulkarni from Almond Financial Services Limited. Please go ahead. Hello. Sir, my question is about this tent city Varanasi, and you have mentioned in the press release that it is not in operation due to the force measures adopted by NGT. So can you just give me some explanation on this and what is the status right now? Bijal can kindly explain what is present status. लेकिन मैं इतना बोलूं कि वाराणसी के अंदर जितने साल फोर्स मेजर है इतना एक्सटेंशन हमारे को लीव पीरियड में मिलने वाला है, यानी कि 5 साल का है तो 5 साल हमारे को कंटिन्यू करने के लिए अथॉरिटी रेडी है। दैट डिसीजन इज एमिकेबल सॉल्यूशन बिटवीन प्रवेग एंड अथॉरिटी कि rather than falling into disputes और बनाने के बाद कोई प्रॉब्लम हो, उससे अच्छा ये है कि हम 1 साल डिफर करें। बाकी की बात आपको बिजल मैन ब्रीफ कर दे। बिजल मैन। Yeah. So basically, it's almost majority hearings has been done. So now the court has all the supportings and whatever data and documentation they were needed from the different authorities. So we hope that in next 2-3 months this will be solved and all the authorities will be having the required approvals and all to move forward for the next season. ओके मैम, इसमें अपना कैपेक्स पूरा हो चुका है ये इसमें? Yeah, see basically the business tented accommodation properties. So all this जो भी कैपेक्स है that is already there with us in our go downs over there. Okay.
Okay, ma'am. Thank you. लेकिन some part of Bijalben, we have used some part of tent Part of at inventory, Ayodhya. it has been moved to Ayodhya. Okay, ma'am. Understood. Thank So you. some parties we have used efficiently. Okay. Thank you. The next question is from the line of Pritesh Chheda from Lucky Investments. Please go ahead. So just one question. So after putting up these 23 properties, would you take pause to first consolidate and operate them before adding any newer ones, or how should be your strategy? Because you have moved from 2 to 11 this year, and there are another 13 which are lined up. So how should we look at it? प्रीतेश भाई, ये जर्नी, ये जो एक्विजिशन की जो मोड है हमारा, वो काफी एनालिसिस के बाद हम कर रहे हैं. आप उसका एग्जांपल भी देख सकते हैं कि दमन दीव के अंदर हमारा 70% और 60% के आसपास ऑक्यूपेंसी रहा इवन फर्स्ट 6 महीने में. तो ये सारी एनालिसिस के बाद हम काम करते हैं. तो जहां भी अपॉर्चुनिटी है, मेरे को लगता है वी हैव कॉन्फिडेंस, तो उसके बेस पे हमारी ये जर्नी कंटिन्यू रहने वाली है. मैं इतना बता दूं आपको. So we will continue with the addition of properties, बराबर? Additional property depends upon how best things make available for our guest. Okay. जो कुछ यूनिक हो. Okay, sir. Thank you. You can say thank you. Thank you, sir. Thank you. And the next question is from the line of Rushabh, an individual investor. Please go ahead. Hi. Am I audible? Yes, sir. Yeah. Thank you for giving me the opportunity. My question was regarding the Varanasi tent city, the force majeure, which is already clarified. Also, another question which I had was, as an investor, are we expecting any dividends or any corporate restructuring to be done in your company? So say split or bonus or anything like that? Hello? Yes, sir, you are audible. Yeah. I am saying, am I expecting, as an investor, should we expect any restructuring in the corporate structure of the company, say any splits or bonuses to be announced in coming future? So right now there is no any such a decision company has taken, and if the decision which contribute the growth of the company, it will be definitely taken care of. And it is premature to say at this stage that we are considering such a proposal. It's not like that. But our company's eyes on acquisition of our activities, kind of another companies or another small company who is doing advertising activity, exhibition activity, who has good team, good human resources, experienced human resources. That kind of proposal company may consider, but there is no any such proposal for restructuring. Okay. Rushabh, sir, does that answer your question? Hello? Yes, sir. Yeah, I'm saying, should we be expecting any split in the face value of the shares, as we see very less volatility, very less volume and more volatility in the stock? Right now, no. Not any such proposal or such a discussion is going on. Okay. Thank you. Thank you. The next question is from the line of Piyush Jain, an individual investor. Please go ahead. Hello. Thank you for the opportunity, sir. So we want to understand how much CapEx is required for this new 13 resort which we will be opening in next 12 months to 15 months? We have just recently concluded our preferential allotment, and I think it's enough to do these 22 resorts
up to operationalize. So no such a new fund requirement is with the company. Okay. And few of your earlier presentations and Concall, sir, you also expressed your interest that you want to go to some heritage type of site in maybe MP or Rajasthan or somewhere else. So is it something right now we are looking for outside the Gujarat and Rajasthan, or we are talking to some other states or somewhere where we want to expand? Sir, I would like to tell you that right now we are developing 4 sites in Rajasthan, 2 sites in Maharashtra, 3 sites in Daman, 4 sites in Diu, then after Lakshadweep 1 site, then after Gujarat 4 sites already we are developing. Then after Uttar Pradesh we are developing 3 projects there. Again, you will find some more acquisition, maybe from this state or another state. We have already, our team is working on that direction. So we are not specific company right now. 6 अलग-अलग जगह पे हम काम कर रहे हैं. We want to expand up to 21 state minimum. Okay, and this 21 state target is for FY25 beyond or for the Within 28. Within 28. Okay. And out of country also. Out of country few project also. And but सर हमारा जो स्टाइल होगा वो यही होगा टेंट वाला बिजनेस जो लो कैपेक्स और वैसा ही होगा, करेक्ट? वी विल नॉट बी मूविंग दिस फ्रॉम दिस. मैं आपको थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ये टेंट वाला बिजनेस नहीं है. हमारी जो साइट्स है अभी टोटल 23, इसमें टेंट वाली स्ट्रक्चर में भी 1, 2, 7 है, 7, 8. So it's not only a tent, it's a mixture of some is a tent where we have to mantle or dismantle. There is a very eco-sensitive sites is there. We are using tent structure. Where there is a liberty to do another kind of structure, we are doing different structure. You may find in social media too, like a Dholavira, like a Daman, you find a different structure there. Like a Lakshadweep, you find a different structure there. Like Ahmedabad, the 2 hotels, it's not a tent city kind of structure. So it's an experiential hospitality concept where we use a tent, where we use the wind speed is very high. We are using a permanent structure, but not a civil structure where we are investing 1.5 crore investment. That kind of structure we are not avoiding. So it depends upon geographical, eco-sensitive, as well as our creative team decides. तो हमारा जो टेंट स्ट्रक्चर है ऐसा नहीं है. काइंडली इसमें से थोड़ा बाहर आइए, ये मैटर को आगे एक्सप्लोर करिए. नहीं आई अंडरस्टूड. मेरा मतलब ये था कि हम बहुत ज्यादा हैवी कैपेक्स वाला स्ट्रक्चर में नहीं जाएंगे, करेक्ट? जिससे कि जो हम बोलते हैं कि हमारा लाइट एसेट मॉडल, जो आप लाइट एसेट मॉडल जहाँ पे आप कई बार बोलते हैं ना कि ब्रेक इवन जो है आप वो 18 महीने या 24 महीने में आप ब्रेक इवन अचीव कर लेंगे. तो वी विल कंटिन्यू विद दिस, करेक्ट? या करेक्ट. आपने पहले कॉल अगर अटेंड किया है तो सारी डिटेलिंग हुई है. हमारा जो एवरेज जो कॉस्ट है टेंटेड का वो 15-20 से लेके सेमी और परमानेंट स्ट्रक्चर जो यूज कर रहे हैं वो हमारा 45 आसपास होता है. और जहाँ जैसे हमारा अहमदाबाद की 2 प्रॉपर्टी है वो एक एक्सेप्शनल है, बट वो भी हमने लीज पे ली है. इट्स ऑल्सो लाइट एसेट्स मॉडल. सो हमारा जो लाइट एसेट्स मॉडल है वो कंटिन्यू रहेगा, एक्सेप्ट वेरी एक्सेप्शनल प्रपोजल कम टू अस. अच्छा सर, 1-2 चीजें और जाननी थी. जैसे ये अहमदाबाद वाली आपने जो बोली सिंधु भवन वाली, तो ये लीज मॉडल पे मतलब क्या, वी आर मैनेजिंग एंटायरली एंड वी आर पेइंग सम लीज रेंटल, और वी आर जस्ट मैनेजिंग एंड वी आर गेटिंग सम फीस और कमीशन ऑन फॉर मैनेजमेंट? No.
इट्स ऑन प्योर लीज, लाइक टेंट सिटी के लिए केवड़िया में हम लीज पे करेंगे, कच्छ में पे करेंगे, अयोध्या में पे करेंगे, सेम हम लीज पे करेंगे. एंड इट इज अ रेडीमेड फर्निश hotels provided to Praveg. पर ये तो सर includes not only land and building. These include land, building, furniture, fixture, everything, machine, air conditioning, everything done by the leasing. तो इसका क्या सिंधु भवन वाले होटल का क्या लीज रेंटल होगा सर, मंथली या ईयरली बेसिस पे? Vijay Ben, kindly you brief this exact figure. चलेगा सर. तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर नेक्स्ट ये मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ 7 से 8 के बीच में आसपास. 7 से 8 करोड़ साल का. Vijay Ben? Yes, it's 7 to 8 CR. It's exactly around 65 lakh per month. और ये आज के दिन में हमारा होटल प्रॉफिटेबल है? See, basically we have just recently opened in the mid of the November. ओके. नहीं अभी मतलब जो लास्ट 3-4 महीने के हिसाब से क्या लगता है, हम आसपास नियर टू प्रॉफिटेबल है और मे बी एक आध साल में हम प्रॉफिटेबल हो गए? This hotel is basically we are more focusing for the weddings. We have, as earlier Vishnu ji has elaborated on that part, that we have the banquets also. So major focus of this hotel is on the wedding events. वेडिंग साइड. हाँ, आई नो वेडिंग इवेंट. एक चीज और बताइएगा कि ये जो एग्जीबिशन और जो ये अपना होटल वाला है और एग्जीबिशन है, तो इज इट समथिंग कि इसमें से कोई बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल है और कोई कम है, या हाउ वी आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट कर रहा है? बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड लेट्स से हमारा ये रिजॉर्ट वाला बिजनेस ज्यादा पिकअप होगा. लेट्स से FY25 में शायद आज जो हमारा जो ब्रेकअप है वो 60-40 का या 48-36 समथिंग परसेंटेज का है, 50-60, वो ब्रेकअप हमारा अभी टूरिज्म हॉस्पिटलिटी की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा. सो मार्जिन इसमें एक्सपांड होगा या एग्जीबिशन कम मार्जिन है कि ज्यादा मार्जिन है? एग्जीबिशन इवेंट में 20% EBITDA मार्जिन पे हम काम करते हैं और हॉस्पिटलिटी में 40% पे काम करते हैं. अच्छा, ओके. 20 and 40. ओके. And that is reason why we are lean toward hospitality business. ओके सर, जस्ट वन थिंग, एक सजेशन जैसा है, जो हम ये पूरा पीपीटी में जो देते हैं कि जैसे इतने कॉटेजेस हैं और इतना एवरेज प्राइस चल रहा है, तो मतलब उसमें हम ऑक्यूपेंसी का कुछ परसेंटेज और ये मतलब 6 महीने का, लास्ट के 9 महीने का है या क्या है, अगर वो थोड़ा सा डेटा प्रोवाइड कर देंगे तो थोड़ा और हेल्पफुल हो जाएगा. बिकॉज जैसे आपने ये प्रोवाइड किया है कि एवरेज प्राइस 9,500 चल रहा है, बट ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है कि ये लास्ट 9 महीने का है कि लास्ट 3 महीने का, एक क्वार्टर का है या पूरे साल का है. प्लस जैसे 140 टेंट हमने लिखा है अभी यहाँ पे ये वाराणसी का, तो इसमें से थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी या कुछ दे देंगे, या हम ये रिजॉर्ट वाइज अगर कुछ रेवेन्यू ब्रेकअप दे देंगे जैसे हम जो देते हैं कि भाई वाराणसी में, क्योंकि क्या होता है सर, कुछ हमारे 2 महीने 3 महीने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ हमारे 1 महीना 2 महीना वाले हैं, कुछ अभी 12 महीने वाले भी आ रहे हैं, तो थोड़ा सा क्योंकि नंबर ऑफ रूम्स में तो सर समझ में आ जाता है 680 या समथिंग रूम है, बट हाउ मच लेट दोज रूम्स कैन जनरेट रेवेन्यू, वो थोड़ा सा फिगर आउट करने के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा अगर हम इसमें से थोड़ा सा कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे तो पॉसिबल है. You are right there, and in annual report we are publishing each and every resort in details. So it will be not a quarterly, but you will get annual reports, everything in details. ओके. तो सर जैसे ये अभी अगर वाराणसी में जो हमारा चलता है 140 टेंट हम बोल रहे हैं, तो ये सर इफेक्टिवली कितने महीने के लिए चलता है, मतलब अगर इसका समझे? मैं आपको पहले भी फिर से ब्रीफ करूं कि मॉनसून सीजन के ऊपर डिपेंड करता है. गंगा नदी रिवर ऐसी है कि अगर ज्यादा मॉनसून है तो अक्टूबर महीने में अक्टूबर से नवंबर के बीच में ड्राई होती है. जहां हमारी टेंट सिटी लगती है वो नदी के अंदर लगती है, रिवर के अंदर लगती है, तो वो ड्राई होने के बाद ही हम इसको इंस्टॉलेशन कर सकते हैं. और माय टीम रिक्वायर्ड 40 days टू इंस्टॉल एंटायर टेंट सिटी देयर. आप समझिए, तो वो डेट पे डिपेंड करता है. अगर अकाल पड़ा है, ऐसी कोई परिस्थिति है, तो हम उसको सितंबर में स्टार्ट कर सकते हैं डेवलपमेंट. तो सितंबर में स्टार्ट करेंगे, अक्टूबर में स्टार्ट होगा. अगर अक्टूबर में ड्राई होती है तो नवंबर दिसंबर के 10 से 15 तारीख के आसपास स्टार्ट होगी. तो अगर दिसंबर 15 से हम स्टार्ट करते हैं तो आप समझ सकते मोटा मोटा 30 अप्रैल
तक हम काम कर सकते हैं। 30 अप्रैल मई में भी 15 मई तक हम काम कर सकते हैं। तो मोटा मोटा 5 महीने का बिजनेस है वहाँ। ओके, और इस साल अभी ये वाले साल में जो सितंबर अक्टूबर में, ये साल में कहाँ से चालू हुआ काम और कब तक चल रहा है? इस साल किया ही नहीं बिकॉज ऑफ फोर्स मेजर, जस्ट बताया आपको। तो ऑलरेडी मैं वही बताना चाहता हूँ कि अगर रिवर गंगा ड्राई जल्दी होती है तो हम 15 दिसंबर कर रहे हैं। सबसे पहले हमने जब स्टार्ट किया था तब 15 जनवरी में कर सकेंगे। उसके 2 रीजन थे। हमने पूरा नया बनाया था, स्ट्रक्चर तैयार किया था। तो स्ट्रक्चर नया बनाना और इंस्टॉल करना इसमें टाइम अलग लगता है। तो वो पहला साल एक्सेप्शनल था। अभी हमारी टीम ऐसी प्रिपेयर है कि 40 डेज में हम उसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। तो जैसे जो डेट पे रिवर गंगा ड्राई होती है, हमारी जो लॉजिस्टिक पॉसिबल है नदी के नजदीक जहाँ फ्लो होता है वहां तक हम पहुंचा सके हमारी सामान को, तब से हम 40 डेज लेंगे। तो मोटा मोटा आप एक्सपेक्ट करो कि 15 दिसंबर के महीने में हम ऑपरेशनलाइज करना चाहते होते हैं। सर लास्ट एक ही चीज, ये फोर्स मेजर क्यों हुआ, इसका क्या रीजन है? और ये मतलब दिस इज ओनली टेम्पररी फॉर दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर वी विल अगेन डू बिजनेस ईयर अगेन? सर मतलब एक ही चीज जानना चाहता हूँ, मतलब आई जॉइन लेट इन द कॉल कि फोर्स मेजर क्यों हुआ वारंटी का, और ये सिर्फ इस साल के लिए टेम्पररी है, अगले साल से वापस वारंटी में हम बिजनेस करेंगे। I couldn't get you. सर ये फोर्स मेजर का रीजन क्या है? ये जो फोर्स मेजर जो हुआ वो क्यों हुआ? ओके, ग्रीन ट्रिब्यूनल्स में किसी ने PIL किया था। अच्छा, ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ऐसा अभी स्टे भी नहीं है, उसके ऊपर स्टे नहीं है, हम कर सकते हैं। बट एज ए प्रूडेंट इन्वेस्टर आई हैव टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माई शेयर होल्डर। इफ आई पुट देयर, अगर वहाँ इंस्टॉल करता हूँ जिसका खर्चा कंपनी करती है 1 करोड़ के आसपास, करने के बाद अगर ग्रीन ट्रिब्यूनल का कोई डेट्स पे, मुदत पे अगर वो स्टे लगाती है तो मैं इन्वेस्टमेंट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट एंड दैट 3-4 करोड़ कॉस्ट विल incur on that quarter. So to avoid this thing, we and authority has decided to defer this year for for operationalize tent city. ओके, ये कब तक सर ये मतलब ये मैटर रिजॉल्व हो जाएगा? एनी आइडिया, एनी एक्सपेक्टेशन? अभी नजदीक मिडलमैन अगेन यू ब्रीफ प्लीज। Yeah, basically the almost all hearing has been done, and we are expecting that in next 2-3 months this will be resolved. ओके, थैंक यू आपने पेशेंटली सारे सवालों के जवाब दिए विष्णु भाई और विजल भाई, थैंक यू। It's my duty. It's my duty to update my all fellow investors. थैंक यू सर, थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। एंड मतलब आप सीइंग द जर्नी फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड एंड वेयर व्हाट द कंपनी राइट नाउ डूइंग, इट्स वेरी रियली इंस्पिरेशनल। थैंक यू Please, thank you. Thank you. Ladies and gentlemen, please limit your questions to 2 per participant. The next question is from the line of Kamat Sachin, an individual investor. Please go ahead. हेलो हेलो, क्या दे रहा है सर? Yes, sir. ओके, एक ही क्वेश्चन है वो वारंट के हिसाब से। तो FY24 में हम लोगों ने लाइक अराउंड 15 लाख वारंट जो है इक्विटी में कन्वर्ट हुआ है, राइट? और आई थिंक इन एडिशन टू दैट अभी रिसेंटली भी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है। तो ये सर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जब होता है तब उसकी प्राइस मतलब डिटरमाइन करने का तरीका क्या है, ये मुझे पूछना था। It's a SEBI regulated guideline. Average price of last 10 business day and 90 days, whichever is higher is applied. So उसके ऊपर होता है। और we have not diluted equity, we dilute equity on need base. जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तभी हम डायल्यूट करते हैं। ओके, और ये जो प्रोसीड मिले हम लोगों को वो इस साल यूज होंगे या नेक्स्ट साल यूज होंगे?
क्या हो गए? जो इसके प्रोसीड्स मिले हैं, अभी जो रिसेंटली आपने एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है, उसका जितना भी प्रोसीड्स मिले हैं वो इस साल यूज होंगे या नेक्स्ट साल के प्रोजेक्ट में यूज होंगे? This year only, because all 12 project is under operation, under development. So we want to use that procedure as early as possible so as to make operational our resort as earliest. ओके, थैंक यू। और सर और एक क्वेश्चन है, यूलॉजिया का जो अमलगमेशन हुआ है, तो उसके बाद क्या उनके प्रमोटर्स आर पार्ट ऑफ द प्रमोटर ग्रुप, अपने प्रवेग के प्रमोटर ग्रुप में है वो? Definitely. They are right now. They are in operation. The operation activity is doing by that key person. I see. Okay. और सर आई थिंक आई मिस्ड द इनिशियल पार्ट, पर यूलॉजिया का कंट्रीब्यूशन कैसा रहा इस क्वार्टर में? सर यूलॉजिया स्टार्टेड इन नवंबर 15, 1st और 15 के बीच में चालू हुआ, तो इज द निग्लिजिबल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरऑल पिक्चर, बट it will be very good and booming in next year and this quarter also, running quarter also. ओके, तो इसके डिटेल्स हमें मिलेंगे कहीं पे, मतलब रिपोर्ट में या फिर? We will get in annual report also with detail. Okay. Yeah, thank you very much sir, और thank you very much, good numbers. Yes, congratulations. Thanks. Thank you. And the next question is from the line of Mohsin, an individual investor. Please go ahead. Yeah, hello. Thank you, sir, for answering all the questions patiently, and thank you for the opportunity. I think a couple of questions to already answer हो गए around the preferential allotment and the capital proceeds. But मेरा next question इसी line पे था कि अभी हमने जो capital raise किया है, we are expecting to use it for the next 12 resorts that we need to make operational. But company का stand क्या रहेगा for future growth when we need capex? Preferential allotment of equity dilution is probably, is that going to be the same route, या फिर हम internal accruals की policy follow कर रहे हैं, we are building up our cash position, या फिर क्या strategy लेंगे for future growth plans? Sir, very simple strategy we are following. We want to reach up to a certain level. Every year we need, for 10 resorts, we need around 120 crore capital for new projects, new resorts. For that, we have to reach up to 120 crore or 100 plus crore internal accrual. Till then, to achieve minimum 35 resorts, to achieve 100 CR internal accrual, we need 30 to 35 resorts, so as to our PAT line is 100 crore plus. तब तक जो फंड गैप रहेगी उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई हुई है। जब रिक्वायरमेंट फंड की होती है तो अच्छे प्राइस से हम प्रेफरेंशियल करते हैं। वी आर नॉट डायल्यूटिंग इक्विटी एट अ स्ट्रॉक। जब रिक्वायर पहले हुआ 229 पे, दूसरा हुआ 269 पे थोड़े वारंट, उसके बाद हुए 487 पे, उसके बाद हुए 670 आसपास। तो आप समझ सकते हैं हर स्टेज पे हम उसका बेनिफिट भी लेते हैं। Yes, correct है, but what I'm just trying to, मैं ये establish करने की कोशिश कर रहा हूँ कि equity dilution further या preferential strategy on the plate है, मतलब option है कि अब वो option अभी रोक देंगे because further plans में हम focus करेंगे अगर हमें क्या? मेरा प्लान अभी 23 ऑपरेशनल करने में है और मैक्सिमम एफिशिएंटली उसको हम मार्केट में प्लेसमेंट करना चाहते हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स को, रिसोर्ट्स को अच्छी तरह उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। जैसे अपॉर्चुनिटी नई रिसोर्ट्स की आती है कोई, तो हम उसको स्टडी करेंगे। हमारा वो जो टोटल रिसोर्ट 30 रिसोर्ट 100 करोड़ की जो पैट लाइन बनाई है वो अचीव करने में जो हेल्पफुल होंगे वो ऐसे प्रोजेक्ट हम एक्वायर करेंगे। और जैसे ही 100 करोड़ प्लस का हमारा अचीवमेंट होता है हम डायल्यूशन बंद करने वाले हैं। और अभी इतना बोल सकता हूं मैं आपको कि 23 के बाद 30 के बीच में 7-8 रिसोर्ट की गैप है, तो उसके लिए हो सकता है हमारी फंड रिक्वायरमेंट अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी तो थोड़ा बहुत करेंगे।
but that will be the last. Okay, sir. Thank you. Yes, all Krishna, sir. Thank you for answering the questions, and good luck. Yeah. Thank you. And the next question is from the line of Rushabh, an individual investor. Please go ahead. Yeah. Hi. I wanted to ask that last year we were planning to start the business in Africa, is what the management has said. What are the updates on it? Because we see new subsidiaries being formed recently. So any major movements going in that direction? We have registered subsidiary company. It's not only to register the company, some development we are doing on that direction, and you will get good news about African experiential jungle safari. I am also eager personally. Amazing, sir. Every year I am going there, every year, for wildlife experience. I am a wildlife lover for that two resort is very important for me. Masai Mara and Serengeti. Yes, sir. You talked about that last time as well. Rushabh, sir, does that answer your question? Yes, it does. Okay, thank you. As there are no further questions from the participants, I now hand the conference over to Ms. Vaishnavi Ambukar for closing comments. Hello. Yes, ma'am. Thank you everyone for joining the conference call of Praveg Limited. If you have any queries, you can write us at research@kirinadvisors.com. Once again, thank you everyone for joining the conference call. Thank you all my fellow investors, and thank you for your interest. Kindly ask us questions and also give us suggestions so as to be further improved. We need your support and cooperation. Thank you. On behalf of Kirin Advisors, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.